Assalamualaikum viewers, this is Kashif Hussain live from online AK English language channel. How are you all? Are you doing well? Well, I hope so. I am very happy to see you again on my online AK English language channel. One of my viewer, he requested me to make a video on a very common and very easy topic. और पहले मैं उस व्यूवर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि वो बुक्स पढ़ने का आदी है, वो सोशल मीडिया यूज़ करने का आदी है, एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग कि वो एक ही ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज चैनल की वीडियोस देखने का भी आदी है. और ही रिक्वेस्टेड मी इन द कमेंट कि सर आप इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो बनाएं. सो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी रिक्वेस्ट पर कोई वीडियो बनाऊँ, सो डोंट फॉरगेट टू राइट इट इन द कमेंट्स. So let's forget about the viewer now and come to the topic. The topic is very simple, which I have already discussed with you. That means used to. Used to का इस्तेमाल हम कब करते हैं? When we talk about those actions which are habitual actions. कुछ लोग सिगरेट पीने के आदी होते हैं, कुछ लोग बुक्स पढ़ने के आदी होते हैं, आप मेरी वीडियोस देखने के आदी हैं, मैं आपके लिए वीडियोस बनाने का आदी हूँ. तो ये जो आदतों की बात होती है, दैट इज़ कॉल्ड हैबिचुअल एक्शंस. इंग्लिश लैंग्वेज में इसको हम किस तरीके से बनाएंगे, आज हमें इस वीडियो में सीखना है. अच्छा, व्हेन वी टॉक अबाउट हैबिचुअल एक्शंस, सो वी हैव अ स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर का नाम है यूज्ड टू. सो इन दिस स्ट्रक्चर द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस बी. तो व्यूवर्स, यहाँ पे बी क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर आप प्रेजेंट में ये यूज़ करेंगे, सो यू विल हैव टू यूज़ बी इज एम आर, इज एम एन आर. और जब हम पास्ट की बात करेंगे तो वहाँ पर हम वॉज एंड वर इस्तेमाल करेंगे. सो द स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी. दैट मीन्स प्लेइंग, रीडिंग, स्मोकिंग, हैंगिंग आउट, reading books, you will use this, and then object. For instance, in prison you will make sentence in this way. वो सिगरेट पीने का आदी है. He is used to smoking. मैं इंग्लिश पढ़ाने का आदी हूँ. I am used to teaching English. आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के आदी हैं. You are used to learning English language. मेरा दोस्त बाहर घूमने फिरने का आदी है. माई फ्रेंड इज़ यूज टू हैंगिंग आउट. मैं नई किताबें पढ़ने का आदी हूँ. आई एम यूज टू रीडिंग न्यू बुक्स. मेरा भाई आइल्स की बुक पढ़ने का आदी है. माई ब्रदर इज़ यूज टू रीडिंग आइल्स बुक. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल इन द पास्ट टेंस कि हम पास्ट में सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे. It's quite simple. Subject plus was were, then used to. Remember, this is the habitual action structure. So verb first form ing, then object. Let's make an example. वो आइसक्रीम खाने की आदी थी. She was used to eating ice cream. वो लड़ने झगड़ने का आदी था. When he was kid, वो लड़ने झगड़ने का आदी था. So how will you make sentence? When he was a kid, he was used to quarreling, or he was used to fighting. वो मुझसे मिलने का आदी था. He was used to meeting with me. वो लोग रोज़ाना क्रिकेट खेलने के आदी थे. They were used to playing cricket daily. So viewers, आपने देखा कि we can use this simple structure in order to talk about habitual actions. You can write more examples by yourself. So don't forget to write your sentences in the comment box. Till then, if you like this video, don't forget to share it, and yes, subscribe our channel. Thank you very much for watching our videos. Take care. Allah Hafiz.